सिमरन माल फंक्शनिंग हुआ है? बहुत बार ओह अच्छा, मतलब बढ़िया वाला मैल फंक्शन हुआ है। ओके। तो एक है आई स्टिल रिमेम्बर, हम लोग शूट कर रहे थे, इट वाज अ सीन वे वी वांटेड इट टू लुक, मतलब नाइट शूट दिखाना था, हम नाइट से कर रहे थे, लेकिन वो जो पर्टिकुलर सीन था थोड़ा लेट हुआ शूट, द शूट स्टार्टेड वेरी लेट, सो वी इट वाज गोइंग बेसिकली इट वाज आई थिंक अराउंड 3:34 in the morning, it was slightly dark. Now all of us are stressed because that was the last day that we had that location in hand, and we had to finish it before 5 at least, because by 5 the color of the sky is definitely going to look like morning. ओह हमको यस रात ही यस, दिखाना है, हाँ तो वो हाँ, प्रेशर था हम पे। और उसमें क्या हुआ है कि आई हैव गॉट दिस सुप्रीमली टाइट पैंट, इट्स एक्सट्रीमली टाइट, लाइक जब मैंने सेइंग एक्सट्रीम ना, कोटेड 2000 उतना टाइट था, ओह बट वी डिडंट हैव एन ऑप्शन बिकॉज देयर वाज अ सर्टेन इशू दैट हैपेंड, कुछ फलाना ढिमकाना हुआ था, तो इसीलिए ये पहनना था। तो उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर there was this one whole scene where I'm getting punched, I'm falling. That short film will come out soon. ओह So ओके, हाँ, I'm falling down and everything, and then I have to get up, I have to fight back, and again sit, cry. It was a whole array of ओके things. ओके, Time was very like we were running out of time. So at one point the director said, "देखो ये एक final take में होना है. It was already 4:30. हमको ऑलरेडी बहुत बहुत मुश्किल से थोड़ा चीटिंग करके वी आर ट्राइंग टू मेक इट लुक डार्क, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 5 o'clock को समझ में आएगा, इट्स एन ओपन एयर शूट। तो आई हैव फॉलन डाउन एंड माई पैंट इज torn in the wrong place and that nobody knows. oh my And it's god, a one time take, I'm in the middle of the scene. okay, Ab if I react, we are running out of time, so nothing can happen. If I stop the scene, we'll have to redo the entire thing, because this was not a OTS where it was a one take, it was a complete take, it was a master okay, shot and we had to finish it off. okay, And we're running out of time, I'm looking at the sky, I'm saying मैं क्या करूँ, अगर ज़्यादा चलूँगी तो दिखेगा कैमरे पे वेरी एविडेंटली कि मेरा मैल फंक्शन हुआ है, और जब मैं गिरी हूँ तो वो फटने का साउंड भी आया है, तो माई को एक्टर्स ऑल्सो ट्राइंग टू स्टॉप लाफिंग, एवरीबडी इज कंट्रोलिंग, यू नो, एवरीबडी इज वेरी सीरियसली ट्राइंग टू प्ले दैट रोल। और जैसे हमने ऐसे तैसे करके वी हैव डन दैट सीन, डायरेक्टर हैज शाउटेड कट, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर, वी हैव ऑल फॉलोन डाउन एंड लाफ्ड लाइक मैनियाक्स, वी लुक लाइक लिटिल चिल्ड्रन इन द कैंडी स्टोर, कंप्लीट क्रेजी चिल्ड्रन लाफिंग आवर आर्ट्स आउट, इट वाज वेरी फनी, दैट्स व्हाई। तो फिर ठीक है उसके बाद, बट आई थिंक ड्यूरिंग द सीन व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, दैट हलचल, दैट रोलर कोस्टर फीलिंग, मुझे लगा खत्म, आज मेरी वजह से सब लोग सुनाने वाले हैं अगर मैंने रिएक्ट किया तो। इट वाज वेरी फनी, आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर द साउंड ऑफ दैट टेयरिंग, द वे it tore also, the way I felt, the way my eyes popped and I had to still stay in character. I think it was challenging, but it was also funny. Wow, I think super. people still, you know, we all, whenever we sit in groups and laugh, we quote that incident and laugh. It's become a very nice memory. Maybe if I had reacted the other way, it would not have been a very good memory to talk about. But ठीक है, all's well that ends well. Oh yeah. super. So I still remember. Yeah. तो तुम अभी बोल रही हो को एक्टर्स थे, बहुत हाँ. सारे लोग थे, सो हाउ इज द सर्कल व्हेन इट कम्स टू दिस इंडस्ट्री? इज इट ट्रू एक तुम्हारी सर्कल्स वहाँ पे मीनिंगफुल होते हैं, या फिर इट्स ऑल लाइक वेरी शैलो, हाई बाय तक ही रहते हैं? हाँ, कुछ रिलेशनशिप्स हाई बाय तक ही रहते हैं और वैसे ही रहना भी चाहिए, नहीं तो व्हेन यू गेट टू पर्सनल इट बिकम्स वेरी थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड। नहीं, थोड़े तो ऐसे भी तो रहना है ना कि वहाँ पे भी तो सपोर्ट चाहिए यार। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे भी होते हैं where the camaraderie is just beautiful, like it is exquisite, it is genuine, it's coming from the heart, and it's how do I explain, it's a fantastic dynamic, everything, you know, some superb. relationships, and that's how it should be also. I still because at the end of the day, somebody who completely understands you, friends who know what you're going through should be also should go through them themselves to be able to stay in your shoes or to even step into your shoes. So some bonds are very real and genuine, and I think it stays for a long time, especially for me, if you ask me personally, the friends I've made in my acting school, when we went to acting school, I think that bond stays till date, and touch wood, I hope it always stays, because it's the way we are with each other, it's the way we can be vulnerable in front of each other, yet at the same time, you know, we can also be our best selves in front of each other, support each unapologetically other being and us. be there. Stand like a support system. Wow, So super. yeah, but this whole conception which people have now, that two co-actors, especially of the same gender, don't get along, I think that is not true. Okay. It's not true. Yeah, so many of my friends are of the same gender. It's not just Okay. opposite sex. And I think yeah, I mean, a lot of people think that there's They no get along ambiguity really between well. two people. No, it's very much there. Oh, wow. Yeah, I think.
obviously, no, when they're of the same age, same Yeah. thing, yeah, Correct. Same industry. same You will industry, connect with yes. each other. That thing is, I think, it's a stereotype now. Ki two Hmm. girls won't get along because they're insecure of each other and all that. I didn't experience that. Okay. Yeah. Superb. Then things are changing, Simran. Things are changing. That's what I said. Na Yes. tab. Yes.